candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today we are going to have an important session on the topic of major problems faced by candidates in stage 1, that is your screening test. So we will be discussing that what are the major challenges which a candidate faced on the day of reporting, whether it is documentation part या examination से पहले और in the phase of examination जो आपके series of test होते हैं like OIR, OLQ test, then your PPDT, narration and GD. इन सारे stages में what is the major problem and you should not repeat these mistakes so as to avoid and get screened in your very first attempt or whatever attempt you are giving. So we will also be discussing ki how to overcome and clear the screening test, which is also considered as the most crucial stage for AFSB interview. Before we move forward, you can subscribe to the YouTube channel of Government Crackers so that you can get regular updates, defense exam notifications and results updates. Now, as we all know that screening is the most crucial stage in AFSB interview. Why? Because until and unless आप screening में shortlist होते हैं, you are not eligible to give your further examinations. इसीलिए this is considered the most crucial stage. ये तो first बात हो गई. Second important thing is this, इसमें जो shortlisting होती है ना, that is why it is known called very crucial, because अगर there are 100 students, so 20 to 25 only get screened in, बाकी के they are screened out. ठीक है, so ratio is very less and we need to make it into this, otherwise we won't be eligible to give further examinations in the AFSB interview. So there are various doubts in the candidate's mind कि हमारा कभी under pressure में भी OIR अच्छा नहीं हुआ, OLQ अच्छा नहीं हुआ, PPDT अच्छा नहीं गया, up to the mark story नहीं लिखी है, या narration में fumble हो गया. So whether will I be screened in or not if either of these tests went not that good. So इसका भी doubt and इसका भी जो myth है, that all will be discussed in this particular session. So सबसे पहले बात करते हैं कि major challenges क्या आते हैं reporting के time पे. So stage 1 आपका जिसमें reporting भी होती है and testing भी होता है, तो basically एक साथ आपको initially ही दो challenge face करने पड़ते हैं. एक तो early morning reporting, आप travel करते हैं, ठीक है, you can avoid this, या तो आप एक दिन पहले अपने रिपोर्टिंग सेंटर्स पे पहुंच के नाइट स्टे कर सकते हैं एंड देन अर्ली मॉर्निंग आपका 6 o'clock या 6:30 आप रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप एक फ्रेश माइंड के साथ जो है एग्जामिनेशन अटेंड कर सकें. सो एक चैलेंज यहाँ पे आता है रिपोर्टिंग का. देन इज योर टेस्टिंग चैलेंज, यानी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और अगर कोई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन में आती है सो माइंड वहां पे ऑक्यूपाई हो जाता है. इसीलिए मेक श्योर कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑल दैट आर एलिजिबल एंड उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, सो दैट आपका माइंड वहां पे ऑक्यूपाई ना हो, बिकॉज ऑलरेडी आपके दिमाग में प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज चल रही होती हैं. सो टू अवॉइड दिस व्हाट यू कैन डू इज कि आप नॉर्मल बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो आप बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए एंड ये मत सोचिए सीइंग द कैंडिडेट की you have to face these number of candidate. It is just you need to perform your best. अगर आप अपनी performance से satisfy होंगे, I am sure that you will be screened in. Next is your OIR and OLQ test. अब इसमें होता क्या है, आपका time pressure होता है. The number of questions are 50 each and the time given is 15 to 17 minutes. At times क्या होता है कि कैंडिडेट कभी कभी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं विच हैज अ चांसेस कि आपके बाकी के क्वेश्चंस छूट जाते हैं, विच कैन रिजल्ट इनटू नेगेटिव फॉर यू, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको आते हो. सो यहाँ पे मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट. देन आता है आपका पीपीडीटी टेस्टिंग. आपको पता है कि स्टोरी राइटिंग के लिए यू आर ओनली गिवन 5 minutes इन टोटल, ठीक है, जिसमें 30 seconds आपको पिक्चर दिखाई जाएगी एंड 4.30 minutes आपको लिखने के लिए मिलेंगे. ना होता क्या है, कभी कभी अंडर प्रेशर कैंडिडेट्स आर अनएबल टू जज व्हाट द पिक्चर इज ऑल अबाउट, या कभी कभी थीम डिसाइड नहीं हो पाती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. सो ये 30 seconds आपके वहां चले जाते हैं. आप इस 4 minute के अंदर
क्रॉस हो जाते हैं, देन यू राइट द थीम थोड़ा सोचने के बाद, एंड देन यू स्टार्ट स्टोरी रिजल्टिंग इन विच कि आपकी स्टोरी नहीं कंप्लीट होती है। फिर आ जाता है नरेशन का पॉइंट। नाउ नरेशन में एट टाइम्स क्या होता है, सुनते सुनते क्या होता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, या किसी दूसरे कैंडिडेट की स्टोरी सुनते सुनते जब आपकी टर्न आती है, so when you start narrating your story, either you forgot it or you get fumbled, and then you think whether I did my best or not, or whether I will screened in or not, or whether my PPDT did not went up to the mark. So इस पे कैसे डील करेंगे? And then in the GD round where you able to give your points or not, आपने GD में कैसा परफॉर्म किया, did you initiated, did you ended, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, challenges आते हैं। तो इन सब की क्लैरिटी टुडे यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ टू टेल यू अबाउट OIR एंड OLQ टेस्ट होता कैसे है, रेटिंग कैसे मिलती है। OIR की बेसिकली रैंकिंग होती है इन 1 2 3 4 5। तो आपको एक कार्ड पे जज किया जाता है ऑन द रैंक ऑफ 1 to 5। Now 1 stands for outstanding performance, 2 is for excellent, 3 is above average, 4 is average and 5 is below average. So हम सबका टारगेट तो होना चाहिए either we should be in OIR 1 or OIR 2, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए एटलीस्ट वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। सेंटर पे कुछ होता है तो इट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट हियर हमें हमेशा टारगेट करना है OIR and OIR 2 के लिए, एंड दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, सो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज योर स्क्रीनिंग जजमेंट। अब इस स्क्रीनिंग जजमेंट में आई विल टेल यू whether you perform good in OIR or not. In either of the case you can be recommended, like there are chances of getting recommended, आप स्क्रीनिंग क्लियर कर सकते हैं। सो इट इज नॉट दैट कि अगर आपको OIR 1 2 नहीं आया तो आप जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए देयर आर 5 कैंडिडेट्स, सीरीज वाइज नंबर मैंने दिया है। सो इवन कैंडिडेट 5 विद द लोवेस्ट OIR मार्क वो भी रिकमेंड हो सकता है, ठीक है। सो यस इज बेसिकली तीनों से यस है। व्हाई? बिकॉज इसने अच्छा परफॉर्म किया होगा PPDT में। सो माय पॉइंट इज दैट इन आइदर ऑफ द टेस्ट अगर आपसे मिस्टेक होती है, सो SSB इज ऑल अबाउट हाउ क्विकली यू रिएक्ट इनटू द सिचुएशन, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस, how quickly you can react into the such a situation and how quickly you can come back, doesn't matter कि आपके साथ कितना worst situation हुआ। This is the game of PPDT test and stage 1 screening in SSB interview. So supposedly आपने OIR अच्छा नहीं किया, so you are performing excellent in PPDT and GD. Suppose आपने OIR बहुत अच्छा किया but PPDT में somewhat you forgot your story complete नहीं हुई, fumble नहीं हुई। So on every aspect you need to find the opportunity where you can perform best out of you and how quickly you can come back, because ऐसा होता है at times कि आपने OIR अच्छा नहीं किया, now you are already depressed कि अब तो मेरा होगा ही नहीं selection, and you did not perform well in PPDT also. In that case you will be definitely screened out. But in case either of your test has not went up to the mark, आप satisfied नहीं है अपनी performance से, but immediately after 10-15 minutes when you're facing your next examination, you're giving your 100%, you're bouncing back with same energy and you're scoring 100% or 90% over there. So this is what SSB is requiring over there. So ये practice से ही आएगा, because initially हम क्या start कर सकते हैं, initially ये practice start कर सकते हैं, and this never give up attitude, this is required for SSB. So for practice, whether it is your last 10 days, for 5 days, 20 days or any number of days, ठीक है, practice is the only key. Now practice आप देखोगे web पे there are information about SSB interview, but there is no practice material till date for SSB. So here on this platform I am providing you with my experience, and this has literally worked out for every candidate, and we have got phenomenal recommendations and reviews by our candidates. So here for SSB you will be getting these 15 different ebooks plus video lecture package in the Army SSB course available on GovtCrackers app. Here for every test basically you are getting more than 1000 plus or 500 plus practice questions as well as sample questions, दोनों ही आपको मिल रहे हैं। So sample से आपको idea लगने वाला है, and then these much questions, solving these much questions is I think
more than enough to clear your screening. I assure you that you will definitely clear your screening with these strategies. And अगर आप इतनी practice even before 5 days कर लेते हैं, even last 5 days अगर आप इतनी practice करते हैं, I assure you at least screening तो आप clear कर ही लेंगे. ठीक है? So keep practicing. Apply these concept, give your best, be yourself. तो रहता ही हमेशा, honesty तो important factor play करती है, but then the most important factor here in SSB is all about practice, because कुछ test we already know it is totally dependent upon practice. जैसे आपका psych हो गया, psych में it's totally your practice की how do you write stories. जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका writing refine होगा, उतना ज्यादा आपके thoughts refine होंगे. So psych is totally your written test. Similarly, you face few on GTOs, few on screening, which is a crucial stage. वो सब कुछ आपका writing पे depend होता है, thoughts पे depend होता है. So the more you practice, the good ideas you will come up. So I think this session was useful for you. You can download the GovtCrackers app, which is available on Apple Store and Google Play Store. And you can go for Army SSB course for these packages available at a very nominal cost. And may you all get the uniforms in this coming year or for the coming course of 2022. And I'll hope most of you get recommended and join the defense services. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.